Good morning, class. So in last class, we were studying the chapter agency. Agency हम पढ़ रहे थे. Agency के अंदर हमने अब तक हमने start किया हुआ था topic creation of agency. So we had covered these topics. We had covered the meaning of agency. We had covered the essential features of contract of agency, and we started with the topic creation of agency. So in creation of agency हमने पढ़ लिया था agency by express agreement, agency by implied agreement, and I explained you agency by operation of laws. Agency by ratification थोड़ा सा लंबा topic था. We didn't have that much time left, so I'll explain this contract of agency today. Now ratification जो term है मैंने पहले भी माइनॉरिटी के केस में, माइनर के केस में ये टर्म यूज किया हुआ है क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो. That on attaining the age of majority, no ratification is available in case of minor. So तब मैंने explain किया था what is ratification. Ratification is nothing but subsequent acceptance and adoption of an act which has already been done before. इसका मतलब क्या हुआ? For instance, suppose आप लोगों के पास मेरा एक लाइब्रेरी कार्ड है. Suppose SOL में लाइब्रेरी है and you have my library card with you. तो आप मेरे को मिलते हो 15 मई को आसपास इन SOL बिल्डिंग and you take my and you have my library card. You take my library card. तो आप 20th मई को मेरे कार्ड पर अपने लिए एक बुक इशू करा रहे हो विदाउट माय नॉलेज. विदाउट माय नॉलेज आपने मेरे लाइब्रेरी कार्ड पर, बिकॉज इट वाज विद यू, आप मेरे लाइब्रेरी कार्ड पर अपने लिए एक आप बुक इशू करा लेते हो. दैट वुड बी फॉर यू, दैट वुड बी फॉर मी, बट आप एक बुक इशू करा लेते हो. राइट. सो नाउ वी अगेन गेट टू मीट ऑन 25th ऑफ राइट हियर. तो आपने बुक इशू कराई ऑन 20th ऑफ May. Right. Now we get to meet again on 25th of May. ठीक है, 25th of May हम दोबारा मिल रहे हैं. तब आप मुझे बता रहे हो कि मैम हमने आपके नेम पर एक बुक इशू करा, हमने आपके नेम पर आपके कार्ड पर एक बुक इशू करा रखी है. You are telling me on this date. Now here on this date I have two options. मेरे पास दो options है. Either I will say no, you have to go back and return the book. Okay, I'll give you a scolding and I will instruct you to go back and return the book to the library and clear my name. Or I would say yes, okay, whatever you have done, I accept it. Okay, you can get book issued on my name, no issues. Right, so I said yes. Now when I am saying yes, what I am doing is I am ratifying your act. Right, I am ratifying the act which you have already done before. So on 25th of May, when I said yes, I accepted your act which you had already done before. Right, so I hope this is clear. Ratification का क्या मतलब है? Ratification simply means subsequent acceptance and adoption of an act. Now, if I talk about the essentials of valid ratification, right? So अब इसमें एक point में यहाँ पे ये समझाती हूँ आपको. ये जो आपने बुक इशू कराई है, जो मैंने आपको 25 तारीख को यस किया, 25 मई को आई सेड यस, ओके व्हाट यू हैव डन आई एम एक्सेप्टिंग इट. सो जो 25 तारीख को यस किया, लाइब्रेरी के अंदर क्या इसका चेंज हो जाएगा बुक? क्या लाइब्रेरी के अंदर जो बुक इशू करने की डेट है वो 20 तारीख रहेगी या 25 मई रहेगी? राइट. सो मोस्ट ऑफ यू आई थिंक वुड अग्री दैट लाइब्रेरी में जो बुक इशूड है उसकी डेट 20 में ही रहेगी. इट वोंट चेंज टू 25 में जब मैंने यस कहा था. सो what I imply by this point here is ratification relates back to time. Ratification जिस टाइम पे हम हाँ या ना कर रहे हैं उस टाइम पे रिलेट नहीं करता. It relates back to time. 20 तारीख को जो आपने बुक इशू कराई है, जिस दिन आपने काम किया है, डेट उस दिन की ही रहेगी. Right. So first essential is ratification, which we should remember all the time, that ratification relates back to time.
Right. Let us understand some more requisites of valid ratification. So first one is the act must have been done on behalf of identifiable principle. यहाँ मैंने लिखा हुआ है act must have been done on behalf of identifiable principle. So suppose A is representing himself as agent of somebody. A says I am agent of a person and वो B को बोलता है that I have a very lucrative deal for you if you can enter into it. Right, so but I'm not going to tell you, I'm not going to disclose the name of the agent or the name of my principal or who my principal is, right? So in this case, there can't be valid ratification. जब agent कोई ऐसे बोल रहा है, I am doing it on somebody's behalf and not disclosing the identity of that somebody, right? So वहाँ पर nobody can come and ratify that act. So जो ratification है that act could only be done on behalf of an identifiable principle. So A अगर B को बोलता है that I am agent of C, I am representing C in dealing with you. तो यहाँ पर identifiable principle कौन है? यहाँ पर identifiable principle है C, right? So the first point is the act must have been done on behalf of identifiable principle. It could not be done. The ratification could not be done in case the act by agent was done on behalf of an undisclosed principle. Next is principle must be in existence at the time of making contract by agent. So principle must be, the second point is principle must be in existence at the time of making contract by agent. ये यहाँ पर ये इसलिए है पर्पस में कि अगर सपोज कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले, राइट, कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल इज नॉट इन एग्जिस्टेंस. जो प्रिंसिपल है दैट शुड बी प्रेजेंट, प्रिंसिपल मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन द एक्ट मस्ट हैव बीन डन. कंपनी के बिहाफ पर, राइट, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट अभी नहीं हुई, ठीक है, उस कंपनी के बिहाफ पर अगर एजेंट्स काम कर रहे हैं और कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो कंपनी है वो उसको रैटिफाई कर रही है उस एक्ट को जो प्रोमोटर्स ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले किया था, तो वो इनवैलिड है. तो प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बाय एजेंट. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल मस्ट हैव द कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी. So principal must have contractual capacity, matlab should be major, should be of sound mind, should not be disqualified by law. Next is act must be capable of ratification. So what is the meaning of this? Act must be capable of ratification. इसका मतलब ये हुआ कि वो act illegal act नहीं होना चाहिए, ऐसा act नहीं होना चाहिए जिसमें consideration नहीं है. So it should be satisfying the essentials of a valid कॉन्ट्रैक्ट. तो ऐसा एक्ट होना चाहिए. अगर वो एक्ट इलीगल है, ठीक है, किसी को मारने का एक्ट है या फिर किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करने का एक्ट है, सो दैट कैन नॉट बी रैटिफाइड. सो एक्ट मस्ट बी केपेबल ऑफ रैटिफिकेशन. नेक्स्ट इज होल एक्ट, होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रैटिफाइड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रैटिफाइड? फॉर इंस्टेंस, A represents himself as an agent of C and goes to B to buy car on behalf of C without C's permission, right? A says to B that I want to buy 2 of your cars. B had 2 cars, car 1 and car 2. I'm not naming them, car 1 and car 2. So A बोलता है C wants to buy both of your cars, car 1 and car 2. B says yes. A C के पास जाता है that I have done this deal of buying 2 cars from B on your behalf. So C says, okay, I will buy car 2, but I will buy car 1, but I will not buy car 2. Right? तो यहाँ पर this is not valid ratification. Valid ratification वो होती है when whole of it is being ratified. A ने जो काम किया है B के साथ, जो transaction किया है B के साथ, whole of that must be ratified. Right? अगर A ने 2 cars के लिए deal किया है, then 2 of the cars, C बोल रहा है अपनी मर्जी से, नहीं, I will accept car 1, not car 2. So this act is not valid. This ratification is not valid. So whole transaction must be ratified.
Next is principal must have knowledge of all material facts of the act to be ratified. Next is principal must have, repeating the point, principal must have knowledge of all material facts of the act to be ratified. So इसका मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल है उसके पास जो भी एजेंट ने काम किया है, एजेंट शुड डिस्क्लोज एवरीथिंग टू दी प्रिंसिपल. उसने किस प्राइस पे, क्या कमोडिटी, किस डेट पर, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स है अबाउट दैट एक्ट. So all the material facts of the act must be disclosed to the principal. Next is ratification must take place within the reasonable time. So very easy point, ratification should be done within a reasonable time. कोई 1 साल बाद, 6 महीने बाद बोल रहा है okay I'll ratify what you have done, that won't be valid. और जो ये reasonable time है, that will be defined, that there is no particular definition of this reasonable time. तो इसका जो ये reasonable time है, it depends on the judgment of the judge. If the case goes to court of law. But अगर हम बात करें reasonable time, तो एक reasonable time to a layman, act must be ratified within that time. तो अगर act बहुत ज्यादा time lapse होने के बाद ratify हो रहा है, तो वो valid ratification नहीं है. Next it says the act should not cause loss to third party. Just let me explain it through an example. इसका मतलब क्या है, X should not cause loss to third party. The two parties C यहाँ पर B के घर में रह रहा होता है, as in B had given his house on rent to C. Right? I'm repeating, B had given his house on rent to C. तो C किराए पे रह रहा होता है B के घर में. So A जाकर C को बोलता है, without B's knowledge, and I am agent of B and B has asked you to vacate the house within 2 months. ठीक है, A C को बोल रहा है on 15th of May, for instance, you need to vacate your house within 2 months. 2 months में आपको अपना घर ये खाली करके, B का घर खाली करके जाना है, ऐसा B ने बोला. और A later on goes to B and tells what has happened. So this cannot be ratified. B cannot say, okay, I am accepting. I wanted that house to be vacated anyway, so I am accepting what you have done. So यहाँ पर this cannot be ratified. Why this cannot be ratified? Because here the act of A is causing loss to C. ठीक है, C का जो interest है that is at loss. C को बोल रहा है घर खाली करने को. Like अगर B बोल रहा है उसे with due notice and all, B ने A को भेजा है, that is a separate thing. But ऐसा जो एक्ट है जो किसी दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, that cannot be ratified. So I hope this is also clear. The next is act to be ratified must be within the authority of the principal. Let me again explain this through an example. So act to be ratified, we are doing the 9th point. Act to be ratified must be within the authority of the principal. So what does this mean, authority of the principal? For instance, this director of a company, the director of a company, ठीक है, इसका इस डायरेक्टर का पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है, और this personal assistant, right, goes to another company, director of another company, say X, Mr. X. The personal assistance of this director goes to Mr. X and enters into an agreement to buy certain commodity on behalf of his company from this Mr. X. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये जो पर्सनल असिस्टेंट है, ये जाकर कुछ कमोडिटी ऑर्डर करता है एक्स को अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, दो pretending himself to be the agent of this particular director.
So this PA later on, after doing the deal with X, goes to the director and says, मैंने ये deal करी है Mr. X से buy करने के लिए सामान. Right? And in actual, what turns out in actual, ये जो सामान buy करने की deal करी है, suppose let me talk, वो कोई raw material है, suppose let us say it is wood. उसने 1 ton wood buy करने की बात करी है from X. Right? Now PA goes and tell director कि मैंने 1 ton wood buy करने की बात करी है from X at a certain price. तो वहां पर it turns out कि जो ये wood buy कर सकते हैं above 100 kgs, so that can only be done with the sign of 2 directors. Only if 2 directors sign on the purchase agreement, then the wood above the quantity of 100 kgs could be bought from another company. It could be bought only with this only if there is signed by 2 directors on the purchase agreement. Right. I hope this is clear till here. अब अगर हम इस केस के अंदर बात करें, क्या यहाँ पर ये जो डायरेक्टर है इसको अप्रूव कर सकता है? क्या इसके पास अथॉरिटी है कि वो 1 ton of wood buy कर ले from X? Does he has the authority that he can buy 1 ton of wood from the X individually? So if we say this director doesn't have the authority to buy more than 100 kgs of wood from X, right? So यहाँ पर जो ये एक्ट किया है, right, एक्ट किया है PA ने, that is not capable of ratification by D. Why? By D1 actually, but why? Because this director one has no authority to buy wood above than 100 kgs from anywhere. So act which is to be ratified must be within the authority of the principal. If it is beyond the authority of the principal, then that act cannot be ratified. Now, next point is ratification has a retrospective effect. What is the meaning of retrospective effect? Retrospective मतलब relates back to time. जब मैंने लाइब्रेरी वाला एग्जाम्पल दिया था वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लाइब्रेरी वाले एग्जाम्पल में, राइट? लाइब्रेरी वाले एग्जाम्पल के अंदर आई एक्सप्लेन कि जो जिस डेट पर आपने बुक इशू कराई है यानी 20 मई, उसी दिन की वो बुक इशूड मानी जाएगी. जब मैंने एक्सेप्ट किया यानी 25 मई, उस दिन पे डेट चेंज नहीं होगी. So I hope agency by ratification is also is clear to all of you. So next is, what are the duties of an agent? Duties क्या है agent की? So this is again easy topic. You can please take the screenshot of this slide and study it. For details, read it from the book. Right. So अगर आप इससे पढ़ोगे तो यहाँ पे बहुत ही easy points हैं. That is to act according to principal's direction, to conduct the business with skill and due diligence, to render proper accounts, सब कुछ सच सच बनाना, सच सच बताना, कम्युनिकेशन प्रिंसिपल के साथ करना इन केस ऑफ अ डाउट, इन केस ऑफ डिफिकल्टी, अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना, अपना काम नहीं करना. when you are dealing somebody else, तो वहां पे अपना मतलब के लिए काम नहीं करना, अपने प्रॉफिट्स नहीं बनाना, राइट? जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं थर्ड पार्टी से फॉर प्रिंसिपल, दैट नीड्स टू बी गिवन टू द प्रिंसिपल. आगे अथॉरिटी किसी और को ना देना, जो काम उसे करना है वो किसी और को ना आगे फॉरवर्ड करना. एंड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑन हिज डेथ और इंसैनिटी. फॉर इंस्टेंस अगर प्रिंसिपल की तबीयत खराब होती है और ही डाइज और ही टर्न्स इनसेन और इज इल, तो वहां पर जो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, प्रिंसिपल का मैक्सिमम बेनिफिट कराना. These are the duties of agent. So similarly, these are the rights of agent. You can again take the screenshot of this, rights of agent. Please go through these points by yourself in the book. These are very easy points. I'll do the main topic. Now let us do this next topic. See, we all know when agent is representing principal in dealings with third party. तो उस केस के अंदर principal is bound because the contract is happening between principal and agent.
See, when the contract is happening between principal and agent, तो उस case में definitely principal is bound for the transaction, for the agreement to the third party. Now here we are talking about when is agent liable personally, because agent as such is not liable personally, it is principal who is liable to the third party. So there are certain cases where agent is liable, where there comes personal liability of agent. So वो कौन-कौन से cases होते हैं जहां पर personal liability होती है agent की? Just give me a moment to drink water. Yes. So in what all cases there is a personal liability of agent? So first is where the agent expressly agrees. जहाँ पर agent बोल रहा है, खुद से जाके बोल रहा है third party को, okay, I am taking the guarantee, I am agreeing that कि अगर principal कुछ default करता है, you can sue me. तो जहाँ पर agent expressly agree करता है, therein there will be personal liability of agent. Where the agent is acting for a foreign principal, right? So अगर foreign principal है तो उस केस के अंदर principal को तो पकड़ना easy नहीं है. For instance, अगर एक X limited company है and that is situated in UK. So अगर कोई company UK में situated है तो क्या उस कंपनी के जो उस कंपनी ने अपना एक एजेंट इंडिया के अंदर ऑपरेशंस के लिए हायर किया है और जो बाकी सारी इंडियन फर्म्स हैं उससे वो इंडियन एजेंट ही डील कर रहा है उस एक्स लिमिटेड जो यूके में है उसके बिहाफ पर. सपोज वो कंपनी कुछ गड़बड़ कर देती है, वहां पर कुछ मिसमैनेजमेंट हो जाता है, तो जो इंडिया के अंदर जो भी लोग डील कर रहे हैं कंपनी के उस एक्स लिमिटेड के साथ, कैन दे टेक एक्स लिमिटेड टू कोर्ट बिकॉज वो कंपनी प्रेजेंट नहीं है, इट इज डीलिंग विद एजेंट इन इंडिया, राइट? सो इंडिया के अंदर दैट एजेंट which is acting on behalf of that foreign company or some foreign person can only be taken to court of law. सपोज वो एक्स लिमिटेड नहीं है, बाहर से किसी ने बोला है इंडिया में एक प्रॉपर्टी सेल करने को एंड दैट पर्सन इज एनआरआई, ही इज रिजाइडिंग अब्रॉड, ही इज लिविंग देयर. तो उसने एजेंट हायर किया अब कुछ प्रॉपर्टीज में डील करने के लिए एंड द पर्सन वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज के अंदर इशू आता है. तो जो इंडिया के अंदर लोग हैं, पीपल इन इंडिया whom they will take to court of law, will they take agent or the NRI who is sitting in UK? They cannot take NRI because he is out, he is somewhere out. तो जो इंडिया में एजेंट है that will be taken to court of law, right? So 2 points are where the agent himself agrees expressly, and second point is where the agent acts for a foreign principal. Next is where the agent acts for an unnamed or undisclosed principal. तो एजेंट अगर नाम नहीं बता रहा कि वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो उस केस के अंदर since the third party doesn't know he on whose behalf he is acting, so in that case third party will take agent to court of law. Next point is where the principal though disclosed cannot be sued.
So कौन से लोग हैं? Cannot be. I explained in person debarred by law. उसमें एक पॉइंट बताया था फॉरेन डेलीगेट्स. फॉर इंस्टेंस अगर किसी और कंट्री का यहाँ पर डेलीगेट है, the person is ambassador of a certain country. So can that person has been given certain protection? So that person cannot be taken to court of law. अगर suppose USA का ambassador है या UK का ambassador है इंडिया में, वो कुछ डील कर रहा है through an agent, ठीक है, with third parties, that third party cannot take the ambassador to court of law, right? So that third party can only take the agent to court of law because that that other person has been given protection by law, right? Immunity है उसके पास, ambassador has certain immunity. The next is where the agent exceeds his authority. अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड काम कर रहा है, उसके पास कुछ अथॉरिटी ही नहीं है करने की कुछ चीजें, पर वो अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड काम कर रहा है, so in that case also it is personal liability of agent only. And where the agent acts on an undisclosed person, so I just told this point here, unnamed and undisclosed I cover there and only कि जहाँ पर पता ही नहीं है प्रिंसिपल कौन है, so उस केसेस उन केसेस के अंदर agent will be personally liable. Next is where there is a trade usage or custom. तो जहाँ पर ट्रेड के अंदर it is normal for agent to be sued, जहाँ पर ये ट्रेड के अंदर कस्टम है, यूसेज है, तो उन केसेस में भी personal liability of agent will arise. Next is where the contract is made for non-existent principal. तो अगर कंपनी फॉर्म ही नहीं हुई है, right? I'm talking if company has not been formed और कंपनी के बिहाफ पर काम कर लिया है, so company is not existing only, या एजेंट बोल रहा है कि मैं उसके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ और वो मैं उसके बिहाफ पे वो जो उसका है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, so in this case also agent is personally liable. Last point is where the agency is coupled with interest. Coupled मतलब एजेंट का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है उस ट्रांजैक्शन के होने में, ठीक है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी है, so in that case where there is personal interest of agent as well, agent can be sued. So this is important topic, the personal liability of agent. So in what all cases agent can be taken to court of law. Now this is the last topic of this chapter, termination of agency. So termination of agency मतलब agency कैसे खत्म हो सकती है, बंद कैसे कर सकते हैं agency को. The first one is by the acts of parties. So by acts of parties का मतलब by mutual agreement between principal and agent, principal agent mutually agree कर रहे हैं कि हाँ हम हमारा ये जो एजेंसी है इसको बंद कर रहे हैं. By revocation by principal अकेले मना कर रहा है, I don't want you to represent me in front of dealings with third party, right? Yeah, by revocation by agent खुद मना कर रहा है that I don't want to represent you in future courses. This is by the acts of parties. Next is by operation of law. So you can take a screenshot of this. So इसके अंदर अगर जो एजेंसी है उसका जो पर्पस है, सपोज किसी ने प्रॉपर्टी बाय करने के लिए एजेंसी बनाई थी कि प्रॉपर्टी बाय करनी है हमें, once the property has been brought, एजेंसी वहां खत्म हो जाएगी, वो पर्सन थोड़ी ना उसके बाद भी एजेंट रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ एजेंसी. सपोज एजेंसी वाज ओनली फॉर पीरियड ऑफ 1 year. आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 year, after lapse of 1 year, agency will come to an end. Next is on death or insanity of principal or agent, on insolvency of principal, on destruction of subject matter. Suppose एक कार बाय करने के लिए एजेंसी बनाई थी, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर कार बाय करनी है बी से और वो कार ही डिस्ट्रॉय हो जाए. So in this case also there is no agency remaining because subject matter has been lost. On dissolution of company, the company has been dissolved, right? Partnership firm के अंदर, for instance, partners they are considered as the agent of each other. If the partnership firm is dissolved, उसके बाद they are no more the agents of each other or partnership firm. Right? So after dissolution of company as well, the promoters they are no more the agents of the company. On principal or agent becoming alien enemy. So alien enemy क्या हो गया? Suppose agent है रशिया से और principal है यूक्रेन से, तो जब से उनकी कंट्री के अगर बीच में वॉर हो गई है, जब से हुई है उस टाइम से principal and agent they cannot act for each other, right? So all these on termination of sub-agent's authority. So I've left this topic sub-agent and
sub-agent. This comes under the topic delegation of authority. So I just request you all to please go through that topic by yourself. So this chapter, termination of agency, is over. Next, I will start with indemnity and guarantee. But before doing indemnity and guarantee, I'll explain a gist of bailment and pledge. So I am not going to, because of paucity of time, I'll not be covering the entire. One second. Bailment and pledge. So just explaining what is bailment first. Right. Explaining the chapter bailment and pledge. So bailment is movement of goods, right? Movement of goods from one person to another person. For instance, you give a book to your friend for reading. So that's movement of good from one person to another person. Movement of book from you to your friend. So if you give a piece of cloth to tailor for stitching, right? So that's movement of cloth from you to tailor. So bailment is nothing but movement of good from one person to another person for some purpose, and upon the completion of the purpose, the good will be returned back. So bailment, ये जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, bailment के अंदर, bailment में there are two parties. One is bailor and another is bailee. तो bailor होता है जो अपना गुड दे रहा है, ठीक है, जो गुड मूव कर रहा है. Suppose you are giving your book to a friend, so you are bailor, right? And your friend is bailee. So bailor is the person who is giving the good, who's passing on the commodity, and to whom the commodity is being received. That person is called bailee, right? तो इसके अंदर चैप्टर के अंदर जो चीजें हैं ज्यादा वो यही हैं. जस्ट सेकंड क्लास. और इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है what are the rights and duties of bailor, what are the rights and duties of bailee. इसके अंदर एक और आ जाता है bailment is of two kinds, gratuitous bailment and non gratuitous bailment. So gratuitous bailment मैंने consideration के अंदर explain किया था पहले भी, that in exceptions to the rule no consideration no contract, that in case of gratuitous bailment no consideration is required. Now, for instance, if you are giving your book to your friend, so you're not asking anything in return from your friend. That's an example of a gratuitous bailment. If you are giving your cloth to the tailor for the purpose of stitching, right? So वहाँ पर both of you and tailor, they are getting something in return. They're getting some consideration. You are getting a stitched cloth, right? And the tailor is going to get money. The tailor will get money. So that's the case of non-gratuitous bailment. So bailment can be of two types, gratuitous and non-gratuitous. Gratuitous, where consideration is not involved for both parties. Non-gratuitous, where consideration is involved for both of the parties. So there is question at times, if I say that you give your book to your friend, right, for the purpose of reading. So there comes question, can this be a part of social agreement? आप अपने फ्रेंड को बुक दे रहे हो पढ़ने के लिए, तो क्या ये सोशल अग्रीमेंट है? नहीं है, राइट? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि बेलमेंट इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? बेलमेंट वी आर स्टडीइंग इन चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट इन यूनिट ICA. So bailment, agency, indemnity and guarantee, these are three special contracts. So when you are giving your book to a friend, is it enforceable by law? Is it a contract? Right? So most of you might think that's a part of social agreement. If you're lending your book to a friend, that's a part of social agreement and it is not enforceable by law. But now comes the question, if your friend doesn't return the book to you, okay,
If your friend is not returning the book to you, now can you take your friend to court of law and ask for the return of the book? Yes, you can do. अब मैं बुक को रिप्लेस कर देती हूँ to make it more understandable for you. Suppose आपके फ्रेंड ने मैरिज में जाना था और उसने आपसे आपकी डायमंड रिंग बोरो करी, ठीक है, हो सकता है बुक के लिए आप उसे कोर्ट में ना लेके जाओ, राइट? सो आपके फ्रेंड ने आपसे डायमंड की रिंग बोरो करी, ठीक है, शादी में पहनने के लिए, और आपके फ्रेंड ने आपको वो रिटर्न नहीं करी, वो रिटर्न नहीं कर रहा. नाउ विल यू एनफोर्स इट? विल यू गो टू कोर्ट ऑफ लॉ फॉर इट? I want my diamond ring back. I think definitely you will go and ask for your ring back, ask for the diamond ring back. So इसलिए we say this gratuitous bailment is enforceable, right? So if the other party is not returning the object, you can take the party to court of law. So this was the case of bailment. अब इसके बाद आ जाता है pledge. गिरवी रखना. जो आपके पास कमोडिटी है, सपोज आपकी डायमंड रिंग है, यू नीडेड मनी, आपने वो मनी बोरो करने के लिए अपनी डायमंड रिंग गिरवी रखवा दी विद अनदर पार्टी, तो उसे बोल रहे हैं प्लेज. वहां पर वो डायमंड रिंग जो आप दे रहे हो टू अनदर पार्टी, दैट इज नॉट बेलमेंट, दैट इज प्लेज. प्लेज के अंदर अगेन देयर आर टू पार्टीज. प्लेज के अंदर पार्टीज आर पॉनर एंड पॉनी. The second class, the two parties are pawning. So yeah. So pawner कौन है? Pawner is the person who is giving his good and pawnee is the person to whom the good is being given. Right? So लेकिन यहाँ पर क्या है? पर्पस अलग है. बेलमेंट में कुछ ना कुछ पर्पस से गुड दिया जा रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन से गुड नहीं दिया जा रहा. प्लेज के अंदर good is being transferred for security reasons. This is the main difference, right? And see, in case of bailment, bailee is using the goods. So if you are giving the diamond ring to a friend for wearing to the party, so he can wear the diamond ring. But if you are giving your diamond ring for obtaining a loan, so there the pawnee cannot use the diamond ring if he has to go to a marriage, right? So wahan pe they're supposed to not to use the good in case of pledge, and in case of bailment, bailee can use the good. These are two differences. You can read them in the book. There are 3-4 differences only. Right. One another difference is right to sell the goods. So in case of bailment, the bailee doesn't have the right to sell the good. Right. अगर बेलर उसके पैसे नहीं दे रहा, सपोज जो क्लॉथ है, आपने क्लॉथ दिया स्टिचिंग के लिए टेलर को, आपने टेलर को पैसे नहीं दिए, तो टेलर के पास उस क्लॉथ को बेचने का आगे राइट नहीं है. It can take you to court of law and ask for the damages, ठीक है, ask for the price, ask for his money, but he cannot sell the good. But in case of pledge, जब आप गिरवी रखवा रहे हो, तो वहां पर पॉनी के पास, पॉनी has the right to sell the good. In case the pawner is not refunding, is not paying back the loan, not paying back, in that case, pawny can sell the goods after giving a reasonable period to pawner. So I hope this is clear. इसके अंदर again you can read rights of pawner and rights of pawnee and duties of pawner and duties of pawnee. So this was a quick gist of the chapter bailment and pledge. Please go through it in the book. It is not a very difficult chapter. These were the basics of the chapter. Next, we are going to start with this chapter, indemnity and guarantee. Just a minute. Now, what is indemnity actually? Indemnity means securing against loss. ठीक है, जो हमारे ये contracts of insurance होते हैं, these contracts of insurance are nothing but the contract of indemnity. It's these are the contracts wherein one party is promising the other party to save him or her from the loss. Loss could be caused to him, her by the first party's own conduct or by any other person. So in case of insurance, जो company है, insurance company है, वो जो insured है, उसको promise कर रही है that it will save, it will make good the loss. If anything happens, suppose car insurance लिया, so car अगर damage हो जाती है,
So उसके लिए जो loss हो रहा है, the insurer will give the loss, right? Will reimburse the loss. And here, insurer himself is not causing the loss. That is happening because of some accident on road, probably by the conduct of a third person. So here, the two parties, indemnifier and indemnified. Indemnifier is the party who is making good the loss, who is giving the promise that I will protect you in case in event of loss, and indemnified is the person who is being protected. Just a minute, class. Right, indemnifier and indemnified. Indemnifier वो party है who is actually promising the other party that I'll save you in the event of any loss, and indemnified, to whom this promise is being given, is the indemnified. The party who is being saved is indemnified. Right. Now, next topic is guarantee. Now, what is guarantee? Guarantee में क्या हो रहा है? Guarantee के अंदर suppose A needs loan, or let me say this party, I'm just naming this party as PD. PD needs a loan, उसको पैसे चाहिए, ठीक है? And this person goes to creditor, ठीक है? Creditor है या banker है? So this party goes to PD, goes to CB and says, I am in need of money. Please give me 1 lakh rupees as loan. So CB says, okay, I will give you rupees 1 lakh. You get me a guarantee. You get me some guarantee that in case, in event of loss, somebody else will reimburse, or somebody else will take your guarantee कि you are going to pay me. So this party approaches S and asks him to give his guarantee because he is taking loan from CB. So surety says, okay, I'll give you a guarantee. He says to C that I am giving the guarantee of PD. In case there is default by PD, I will reimburse the loss. Like I'll reimburse the loss. So यहाँ पर ये event हो रहा है, ठीक है? Guarantee में क्या हो रहा है? S promise कर रहा है that he will perform the promise of PD in case of his discharge. In case of his breach, that S will discharge the obligation of PD, will discharge the liability of CB from PD. ठीक है? अब ये जो parties हैं PD, this is nothing but principal debtor. Principal debtor जो पैसा borrow कर रहा है. C is creditor, the one who is lending, and S is surety. So ये मैंने ये तीन parties लिखी हुई हैं, surety, principal, debtor, creditor. Now we might think that indemnity and guarantee are same. So here also S is saving, S is giving C a promise of saving him from the conduct of PD, right? So he is indemnifying CB. यहाँ पर we let us understand the differences कि guarantee और indemnity में फर्क क्या है, right? So we saw in indemnity that there are two parties कौन-कौन? Indemnifier and indemnified. But in case of guarantee there are three parties: surety, principal debtor and creditor. So one of the main differences, right? और क्या है? Meaning contract of indemnity is to make good the loss of the other party, of the indemnified. Contract of guarantee में is to discharge the obligation, to discharge the liability of the principal debtor in event of his default. Next is number of parties. I just told you in contract of indemnity there are two, and in contract of guarantee there are three. It says purpose of contract. Purpose of contract is to save the indemnified from loss, and here is to discharge the obligation, to help him get a loan is the purpose of the contract. Next is number of contracts. Another important point is number of contracts. So what is number of contracts? कितने number of contracts हो रहे हैं? If we talk about this indemnity, यहाँ पर सिर्फ एक contract हो रहा है between indemnifier and indemnified. So there is only one contract. So in case of indemnity, there is only one contract, right, between indemnifier and indemnified. But if I talk about
इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, प्रिंसिपल डेटर विल रिपे द अमाउंट टू सी। एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिटवीन द श्योरिटी एंड क्रेडिटर दैट इन द इवेंट ऑफ ब्रीच बाय पीडी एस विल पे टू सी। और एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पर्सनल डेटर और श्योरिटी के बीच में कि अगर श्योरिटी को लॉस होता है because of debtor's behavior, so in that case personal debtor will reimburse that loss. So there are three contracts in case of contract of guarantee. Next is nature of liability. So indemnity में primary liability है, liability is primary. किसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है? जो इंडेमनीफायर है उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी है। अगर इंडेमनीफाइड को लॉस होता है इमीडिएटली इंडेमनीफायर उसको पूरा करेगा। बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो श्योरिटी है, श्योरिटी की लाइबिलिटी इज सेकेंडरी। श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी कैसी है? अगर लॉस होता है, ठीक है, इट विल अराइज ओनली इन द केस ऑफ डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर ने पेमेंट कर दी है तो इन दैट केस जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी विल नॉट अराइज, बट द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल अराइज ओनली इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय प्रिंसिपल डेटर, therefore we call it secondary, and liability of the indemnifier in case of indemnity is primary. Here rights of party. So rights of party में once the indemnifier has paid the indemnified, so indemnifier के पास और कोई right नहीं है। Indemnifier has no right कि it can go against the principal debtor, against the indemnified and ask for the money. For instance, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कार इंश्योरेंस दे दी है, आपकी कार डैमेज हुई और आपको उससे इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, तो क्या वहां पर इंश्योरेंस कंपनी को किसी और से पैसा मिल रहा है उस कार डैमेज का पैसा देने के लिए? No, it is not getting. But in case of guarantee, अगर श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेटर की जो लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, उसको डिस्चार्ज कर दिया, so in that case surety can now proceed against principal debtor and ask for the money back from principal debtor. So these are certain points of differences between the two. Just please give me 2 more minutes. I'll start your class in 2 minutes. So that was all in the difference between indemnity and guarantee. Next we do what are the different kinds of guarantee. Guarantee के अंदर kinds of guarantee क्या हो गया? Prospective and retrospective. Prospective retrospective क्या हो गया? Prospective is आगे आने वाले डेट के लिए गारंटी दी जा रही है, ठीक है, फ्यूचर डेट के लिए गारंटी दी जा रही है। रेट्रोस्पेक्टिव जब गारंटी किसी पास्ट डेट के लिए दी जा रही है उसे हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव में हो गया गारंटी दी जा रही है किसी पास्ट चीज, प्रोस्पेक्टिव में आने वाली चीज के लिए, रेट्रोस्पेक्टिव में पीछे जो डेट है उसके लिए दी जा रही है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग गारंटी। गारंटी इज बीइंग गिवन फॉर अ पर्टिकुलर डेट। सपोज ए ने बी से 10 लाख का लोन लेना है,
उस 10 लाख के लिए गारंटी ली जा रही है, तो दैट इज फॉर अ स्पेसिफिक डेट। कंटिन्यूइंग गारंटी, तो ए ने बी से 1 साल तक हर महीने के लिए लोन लेना है 5-5 लाख का या 1 लाख का फॉर इंस्टेंस। तो दिस इज केस ऑफ हर कंटिन्यूइंग गारंटी। सपोज ए ने बी से 1 साल तक एवरी मंथ 1 लाख का लोन लेना है, so this will be a case of continuing guarantee। और सी उसे गारंटी दे रहा है, ठीक है, for every loan taken by A for this period of 1 year, a loan taken by A for every month, I am giving guarantee for that. This is an example of continuing guarantee where it is not covering just one transaction, it is covering a series of transactions. Next is for guarantee for the entire debt or partial debt. Now the surety has a right to limit his surety, limit his guarantee. अगर सपोज कोई 10 लाख का लोन ले रहा है तो वहां पे श्योरिटी कैन से ओके आई एम नॉट गिविंग द गारंटी फॉर एंटायर 10 lakhs, आई एम गिविंग द गारंटी ओनली फॉर 40% of the debt. I am giving guarantee, I don't have this much money, I have 4 lakhs and I can assure you that in case of his default I will give you 4 lakhs. This is the guarantee for a partial debt. Partial debt के लिए वो गारंटी दे रहा है कि मैं 4 लाख के लिए गारंटी दे रहा हूँ, that's it. वो entire 10 लाख के लिए गारंटी दे रहा है, that will be the guarantee for entire debt. So I hope this is clear. It was an easy topic. Now again, this is a very important topic, nature and extent of surety's liability. So nature and extent of surety's liability. The surety's liability, first point is surety's liability is secondary. It arises only in the event of default by the principal debtor. श्योरिटी की लाइबिलिटी कब अराइज होगी? जब डिफॉल्ट होगा बाय प्रिंसिपल डेटर. सो आई एक्सप्लेन द डिफरेंस एज वेल. इट इज नॉट प्राइमरी इन नेचर. श्योरिटी को हर हाल में नहीं पे करना है, उसे तब पे करना है व्हेन देयर इज डिफॉल्ट. इसके लिए ही ये टर्म यूज किया हुआ है कंटिंजेंट डिपेंडेंट, दैट इट इज डिपेंडेंट, राइट? इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. So it will arise only on the happening of a certain event. So it will arise only if there is a default by principal debtor. So this, another way of saying it, so we can say surety's liability is secondary, surety's liability is contingent or dependent. It is going to arise only on the default, in the event of default by the principal debtor. Next is, it arises immediately on default of principal debtor. So what does this mean? It arises immediately on default. इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया तो वहां पर ये जरूरी नहीं है कि जो क्रेडिटर है वो पहले प्रिंसिपल डेटर को स्यू करे, उसके बाद श्योरिटी को स्यू करे. जो क्रेडिटर है दैट कैन स्ट्रेट अवे स्यू द श्योरिटी, that can straight away take surety, that can straight away move for surety and ask for his money back. Then next is surety's liability is coextensive. Coextensive का मतलब है similar to the extent of debtor. For instance, principal debtor ने 1 लाख का लोन लिया फ्रॉम क्रेडिटर. इस पे श्योरिटी ने 1 लाख के लोन की श्योरिटी दी, he will return. Principal debtor gave the check of 1 lakh to creditor and that check bounced. It was dishonored. The check bounced. वहां पर C के बाउंसिंग चार्जेस, डिसऑनर के चार्जेस लग जाते हैं. सपोज 1000 रुपीज, 1000, दिस इज चेक बाउंसिंग के चार्जेस लग जाते हैं 1000. So now in this case, जो श्योरिटी है, he is not only liable for 1 lakh, he is also liable for this 1000 के चार्जेस. तो जितनी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है उतनी लाइबिलिटी श्योरिटी की है. दो ही कैन लिमिट इज लाइबिलिटी, ठीक है. ही कैन से आई माय लाइबिलिटी इज अप टू 50,000, बट इन केस दिस इवेंट इज नॉट देयर, उसकी लाइबिलिटी इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर. नेक्स्ट इज श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू लिमिट हिज liability. I explained that earlier in case of partial debt. Next, surety's liability in continuing guarantee. So जब तक वो गारंटी continuing है, अगर 1 साल का पीरियड है, 1 साल के पीरियड तक वो दे रहा है, तो उस केस के अंदर जो भी प्रीवियस डेट जा चुके हैं, फॉर इंस्टेंस ए ने लोन लिया बी से एवरी मंथ, ठीक है, उसको या लेट मी सपोज उसको ये 5 बार उसको लोन लेना था, ठीक है. तो 5 बार के लिए अलग अलग गारंटी हो गई सी की. तो सी आकर इस पॉइंट पर मना कर सकता है दैट आई डोंट वांट टू गिव फर्दर गारंटी.
तो आगे 3 डेट जो नहीं आए हैं अब तक ए के पास, उसके लिए सी मना कर सकता है। बट जो डेट जा चुके हैं, जो डेट जो ये वाला पीरियड का डेट और इस वाले पीरियड का डेट जो ए ले चुका है फ्रॉम बी, that has to be that has been secured by C's guarantee. But C can always revocate the guarantee for future period, prospective period. जो retrospective में वो guarantee दे चुका है, that cannot be avoided. Next is surety's liability, where the contract between principal debtor and creditor becomes void. So becomes void or voidable. So in the event where the debt between principal debtor and creditor is void, for instance, अगर if there is a minor took loan from C और यहाँ पर श्योरिटी ने इसकी लाइबिलिटी दी, तो माइनर और सी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वॉइड है, वॉइड अग्रीमेंट है वो तो, ठीक है, वॉइड अग्रीमेंट है। बट जो श्योरिटी ने गारंटी दी उस लोन रीपेमेंट की, सिंस दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एस एंड सी इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर, इज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, सो वो वैलिड है, वो वॉइड नहीं है, सो दैट इज वैलिड। So contract between surety and creditor can be valid, right? They are valid even if the contract between the principal debtor and creditor becomes void or voidable. So I hope this much is clear. The next topic is rights of surety. Since we have not much time left, I am going to cover this topic in the next class. On Thursday, I'll cover the topic rights of surety, and then this chapter and the Indian Contract Act will be over. After doing this topic, rights of surety, I'll start with Sales of Goods Act on Thursday itself. So I'll end the class here only. Let me see if you have posted any questions. एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कुछ नहीं है इसमें, लॉ के अंदर कुछ मेंशन है, कुछ जगह मेंशन है, जैसे प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स दे आर कंसिडर्ड एज द एजेंट्स ऑफ द कंपनी व्हिच इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, तो वो बता रहा है इन लॉ दैट certain people have been considered as agents. फॉर इंस्टेंस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं दे आर एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर्स, सो दैट्स व्हाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। बुक मैंने सजेस्ट की थी सुषमा अरोड़ा, रजनी जगोटा and Sushma Arora. So you can please note that down. Okay, since I can see no further doubts, I am ending this class, and in case you have doubts, you can always post them on the Telegram group. So I'm not seeing your doubts on Telegram group as of now. In case of doubts, you can post them, and I'll continue your class in, I'll continue this topic in next class on Thursday. Thank you. Indemnity and indemnity तो contract हो गया, indemnifier party है, indemnity is contract wherein one party is saving the another party from loss, and the party who is assuring the other party is called indemnifier, and the party which is being secured from loss is called indemnified. Okay class, so let us meet on Thursday now.